कैमरन ग्रीन, we're still not sure कि वो बैट कहाँ पे करेंगे. What we are sure is अगर वो खेलेंगे तो सिर्फ एक बैटर के तौर पे खेलेंगे. पता नहीं लास्ट टाइम कब मैं और स्टुअर्ट ब्रॉड एक साइड पे थे, पर ठीक है, ऐसा होता है लाइफ में. As I usually do these days, I'll play a short quiz with you guys. एक रैंडम गेस कर सकते हो कि दोनों टीम के स्क्वाड में से सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस इंग्लैंड में किसने खेले? तो चलिए, स्वागत है आप सबका एक और बैठक में. It's time for the WTC final. India तो नहीं है यहाँ पे. South Africa will be taking on the mighty Aussies, who are also the defending champions of the WTC. But Nikhil bhai, starting with you, South Africa finally made it to an ICC final after a very long time. इस साल है नए चैंपियंस का. कोई भी संदेह नहीं है मेरे मन में कि मैं किस साइड हूँ. और अगर सामने ऑस्ट्रेलिया है तो आप मेरे को बायस बोलो, सॉरी, मैं नहीं, मेरा खून उस तरफ जाएगा. तो साउथ अफ्रीका ऑल द वे. 2 फाइनल खेले वैसे दोनों T20s के, तो दोनों में थोड़ा लक नहीं था, नसीब नहीं था, जो भी है. आई थिंक इट इज टाइम टू कवर दैट अप. तो हु बेटर देन टेम्पर टू डू इट. सो ऑल साउथ अफ्रीका. यार अगर पूछोगे किसकी तरफ हो तो मैं भी आप ही की तरफ हूँ. एज इन निखिल भाई ने जो बोला, आई मीन कंप्लीटली इन साउथ अफ्रीका's boat. I think if South Africa wins, this will be an upset. What trends have we seen in the recent past when it comes to test matches at the Lords in June, because that's when the WTC final is happening? क्या expectations in terms of the pitch and conditions? What do you think will be on cards over there? तो देखो, जून में मैचेस हैं लॉर्ड्स में, पर एक बात दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज काफी ड्राई रहा है समर इंग्लैंड में. और वो काफी एविडेंट भी था जब जिम्बाब्वे भी खेली थी कि ड्राई है समर, ज्यादा स्विंग नहीं है, मॉइस्चर इतना ज्यादा है नहीं. तो रूटीनली आई वुड एक्सपेक्ट रन्स एंड देन स्पिन इन द लेटर हाफ. अगर पिछले 10 साल की बात करें तो 4 मैचेस हुए हैं जून में लॉर्ड्स में. 2016 में हुआ था, वेरी गुड ईयर टू रिमेम्बर फॉर मेनी. फिर 21 में हुआ था, मे नॉट बी अ ईयर टू रिमेम्बर फॉर फ्यू. फिर यू हैड अ गेम इन द नेक्स्ट 2 years ऑल्सो. रन्स बने सभी गेम्स में. पहले दोनों गेम्स ड्रॉ थे, जो हमने 16 और 21 की बात करी. उसके बाद का जो गेम था दैट वाज देयर इन 2023, दैट वाज आयरलैंड. और आयरलैंड अभी आप एक्सपेक्ट करोगे आयरलैंड से जीता, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड आल्सो इन दैट वेरी ईयर, इन दैट मंथ, एंड ऑस्ट्रेलिया वन दैट गेम, एंड दैट वाज आल्सो हाई स्कोरिंग गेम. तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो रन्स बने हैं. इस सीजन में मिडिल सेक्स के लिए जितने मैचेस हुए वहां पे काउंटी में, कुछ लो स्कोर्स रहे हैं, बट ओवरऑल द स्कोर्स हैव बीन ऑन द साइड ऑफ 350s 400. तो रन्स की अपेक्षा है मेरी. और जनरल ट्रेंड भी वैसा है कि शायद पहले दिन पिच स्लो हो थोड़ा, बट इट शुड पिक अप पेस और शुड बी गुड फॉर बैटिंग डेज 2, 3, 4. 6 मैच 6 दिन का होता है. ये वाला होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, बट अगर जाता है तो स्पिन गेम में आएगा. So very keen to see how it goes. So, given that the surface is expected to, play that way, wherein there'll be a bit and for batters, bowlers dry रहेगा, तो थोड़ा spinners भी आ सकते हैं शायद. Why do you then say that Australia start firm favorites? Why do you think there's such a big delta between the two sides? ऑस्ट्रेलिया का अगर आप पूरा स्क्वाड उठा के देखोगे तो उन्होंने 772 टेस्ट्स खेले. वो नंबर साउथ अफ्रीका के लिए 367 है, which is less than half. इससे बड़ा डिफरेंस इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड ने 120 टेस्ट खेले, साउथ अफ्रीका के स्क्वाड ने 28 टेस्ट खेले. उसमें भी 9 ऐसे बंदे हैं साउथ अफ्रीका की टीम में, सॉरी सिर्फ 9 ही ऐसे बंदे हैं स्क्वाड में जिन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट खेला भी है. 15 में से तो 6 लोगों ने तो इंग्लैंड में कभी टेस्ट ही नहीं खेला. उसके बाद अगर आप बात करोगे लॉर्ड्स में टेस्ट खेलने की, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने मिला के 24 टेस्ट लॉर्ड में खेले. एंड इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका के पूरे स्क्वाड ने 9 टेस्ट लॉर्ड्स में खेले, और उसमें से भी सिर्फ 7 ही बंदे हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट खेला है. ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक स्टार्टिंग 11 में सिर्फ बो वेबस्टर ही ऐसे रहेंगे जिन्होंने कभी लॉर्ड्स में टेस्ट नहीं खेला. देयर इज अ मैसिव गैप इन एक्सपीरियंस, व्हिच इज व्हाई जो मैंने बोला कि साउथ अफ्रीका दे विल स्टार्ट एज अ वेरी बिग अंडरडॉग. आई थिंक जितने भी अभी तक WTC फाइनल्स हुए हैं 3 ही हुए. दिस इज द मोस्ट डेविड वर्सेस गोलायत बैटल सो फार. क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड में भी जब सेम कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट कंडीशंस इन इंग्लैंड आर मोर सूटेड फॉर न्यूजीलैंड देन दे वर सूटेड फॉर इंडिया. यहाँ कंडीशंस का उतना नहीं है, बट एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस है. ऑल्दो आई मस्ट से एक हल्का सा एज है जो साउथ अफ्रीका के लिए हो सकता है, बट वो भी हल्का ही एज है. as I usually do these days, I'll play a short quiz with you guys.
एक रैंडम गेस कर सकते हो कि दोनों टीम के स्क्वाड में से सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस इंग्लैंड में किसने खेले? डेन पैटरसन। ही सेकंड। मैं I wanted to say David Bedingham for some reason. डेविड बेडिंगम 54 टेस्ट खेले इंग्लैंड, सॉरी फर्स्ट क्लास मैचेस खेले इंग्लैंड में. डेन पैटरसन ने 48 खेले एंड देन कम्स मानस लबुशकिन विद 44. तो एटलीस्ट दो ऐसे बंदे हैं साउथ अफ्रीका की टीम में जिन्होंने टेस्ट भले ही ना खेले हो बट दे हैव बीन इन इंग्लैंड, सो एटलीस्ट दे नो द कंडीशंस. उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि बेडिंगम ने कभी भी लॉर्ड्स में कोई फर्स्ट क्लास गेम नहीं खेला एंड डेन पैटरसन ने भी आई थिंक एक या दो ही खेले और उसमें भी बहुत ऐसा तगड़ा कोई स्पेल नहीं डाला. तो ऑल इन ऑल आई मीन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस at the test level, experience in England, this unit of Australia इतने finals, इतने बड़े matches साथ में खेल चुका है कि I mean they just start hot favorite for me. Okay, I mean I get it. Inexperience clearly काफी ज्यादा है साउथ अफ्रीका के लिए, but थोड़ा उनकी मैं तरफदारी करता हूँ. Do you think that inexperience might actually be a feature, not a bug? It might actually work in their favor. ऐसे कोई ज्यादा players नहीं जिनके दिमाग में बहुत baggage है कि भाई हम लोग finals हारते हैं. Do you think that inexperience might mean क्या they're coming in with a clean slate, with a fresh mind? See, I think experience is, of course, it will matter, but I think what also plays a big role is this is a one-off test, and you have to look into this के ये one-off test में literally anything can happen. आपके पास जीरो बिल्डअप है इन टर्म्स ऑफ कितना भी वार्म अप्स खेले, नथिंग विल मैच द इंटेंसिटी ऑफ अ हाई प्रेशर फाइनल. साउथ अफ्रीका कैसे टेस्ट मैचेस खेलती है? साउथ अफ्रीका प्ले टेस्ट मैचेस व्हिच आर 2 टेस्ट सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहां पे जैसे माकरम ने बोला, आपने ही कोटेड आल्सो के नो वी प्ले दिस अ लॉट मोर, सो वी नो कि मार्जिन ऑफ एरर कम है. तो जब अब देखो एविडेंट है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, तो देन टू मी इट इज इवन मोर एविडेंट एंड चांसी फॉर साउथ अफ्रीका के तुम मस्ती करो. What is there for you to lose? All is there for you to win. तो यहाँ पे कोई लर्न नहीं है, विन विन ही है दोनों सिचुएशन में. कि कोई भी एक बंदा फ्रॉम दैट टॉप 6 इफ ही क्लिक्स एंड ही गेट्स अ बिग वन, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इतनी सक्षम है कि वो ऑस्ट्रेलिया को रोके, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिता दे, बट गेम में रखेगी आपको. सो आई थिंक एक्सपीरियंस बिल्कुल बेडिंगम का काम आएगा, पैटरसन का काम आएगा, स्टुअर्ट ब्रॉड फॉर अ चेंज का पता नहीं लास्ट टाइम कब मैं और स्टुअर्ट ब्रॉड एक साइड पे थे, पर ठीक है, ऐसा होता है लाइफ में. सो ही विल बी अ की पार्ट क्योंकि ही इज बोल्ड अ लॉट एट लॉर्ड्स एंड ही नोस हाउ टू क्रैक लॉर्ड्स. तो अब वो कितना एक दो दिन भी रहे, सी ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैव प्लेड इनफ क्रिकेट, बट इट्स अबाउट हाउ क्विकली कैन यू एडजस्ट. तो वो स्लोप है, कैसे करना है, क्या कौन सा हैंड किस बॉलर को देना है, ये एक्सपीरियंस कैन बी पास्ड ऑन. स्मॉल टिप्स कैन बी पास्ड ऑन. इट विल स्टिल बी अ चैलेंज, but I feel South Africa should look at it as a chance to do something crazy, and that in itself is motivating enough. चलिए यार, हमने बात कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया is clearly the more experienced side, but now let's talk about skill. What about the two sides? How do we look at it? What separates them when it comes to skill, matchups, or players? So we're starting with you. What are some players or matchups that you're looking forward to during the WTC final? Okay, so when it comes to key matchups, again, I'll just take a step back. एक चीज बता दूं कि किसी भी साउथ अफ्रीका बैटर ने इंग्लैंड में 59 से ज्यादा रन्स नहीं बनाए एक इनिंग्स में, एंड द ओनली बैटर जिसने 59 भी बनाए हैं वो है टेम्बा बवूंगा. बट द गुड थिंग वाज दैट 59 केम इन लॉर्ड्स. तो अगर इफ दे कैन फाइंड 4-5 सच 59 इन द टेस्ट, दे माइट एज वेल एंड अप ऑन द विनिंग साइड. बाकी अगर मैं मैचअप्स की बात करूं, I'm looking forward to Bavuma versus Hazelwood because I think Bavuma has a very good record versus the other two, Stark and fortunately Cummins. I mean, not many batters usually have a good record against Cummins, but Bavuma does. अगर मैं उनका against Australian batters देखूं तो he struggled a bit against Hazelwood. तो वो एक मैचअप है जो मैं इंटरेस्टेड हूँ. मार्क्रम की बात करूं तो द केस इज थोड़ा सा ऑब्वियस मतलब यूजुअली यही होता है कि players have a good record against Stark and Hazelwood, but they've struggled against Cummins. तो मार्क्रम का केस थोड़ा वैसा है. तो मार्क्रम versus Cummins again becomes a very important battle. अगर मैं flip करूं, Rabada, if we talk about him, our mind definitely goes back to the 2018 series जो साउथ अफ्रीका में हुई थी and which is remembered for non-cricketing reasons या फिर cricketing reasons ही हैं वो भी. but हाँ, Rabada का record against all Australian batters is pretty good. Actually Steve Smith, he averages the least against South Africa अगर मैं बांग्लादेश हटा दूं तो,
बट वो एवरेज भी ऑलमोस्ट मिड 40s है, तो इसको डिस्काउंट कर सकते हैं. But against Rabada, I think both him and Khwaja are averaging in the 30s. So that's going to be a key battle against जो head को out करेगा वो that person is going to create a massive difference. Not because runs और कोई ज्यादा बना सकते हैं, but the speed with which head gets his runs वो बहुत ज्यादा difference creator हो जाता है. So South Africa have Mulder, Australia have Bo Webster. उनके Cam Green भी mostly खेलेगा ही, but साउथ अफ्रीका के पास फिर टेल एंडर में यानसन भी हैं जो रन्स बना सकते हैं. सिमिलरली बोथ टीम्स हैव कीपर्स हु कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम देम. तो कौन सा कीपर ज्यादा रन बनाएगा, कैरी ज्यादा रन बनाएगा, या फिर साउथ अफ्रीका पहले तो किसको खिलाएगा, वो बहुत बड़ा फैक्टर है. सो देयर आर दीस मिनी बैटल्स. बट हम मैचअप्स की बात करें तो रबाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली डिफाइन द गेम. आई थिंक मार्को यानसन विल प्ले अ मैसिव रोल with the new ball. काफी अच्छा WTC cycle रहा है उनका. And Kagiso के numbers against every batter is good, but if he can take Usman out in the first few overs, that will set this game up for South Africa. क्योंकि हमने देखा against India also that ख्वाजा आके बोला कि I got Bumrah. I have no problem in life if Usman has to come out and say कि I got Rabada. हो जाओ भाई, मेरे को I don't think South Africa will mind. So Rabada versus Usman Khwaja मैचअप भी अच्छा है, काफी दफा डिस्मिस भी किया है. एंड ही इज द गाय हु बैट्स टाइम. क्योंकि आपको दूसरे एंड पे हमें अभी तक नहीं पता कि whether it will be मार्नस या कॉन्स्टास या ग्रीन को ओपन करा देंगे, वी डोंट नो. तो वो ऑप्शन जब तक खुला रहता है, आई थिंक उस्मान का विकेट बिकम्स वेरी क्रिटिकल. एंड मार्को यानसन वर्सेस ट्रेविस हेड, बस टॉप ऑफ निकाल लो या कैच पकड़ लो, बिकॉज these two lefties will play a massive role to even dent केशव महाराज. देखो केशव महाराज बढ़िया प्लेयर है, पर कभी कभी परसेप्शंस कैन आल्सो स्टॉप देम फ्रॉम परसेप्शंस कैन स्टॉप साउथ अफ्रीका फ्रॉम हैविंग अ लॉन्गर स्पेल. और क्योंकि ड्राई समर है, थोड़ा स्पिन अगर मिल जाएगा तो इट बिकम्स क्रिटिकल फॉर हिम to bowl as much as he can to the right-handed batters and create more chances. A lot of memes mentioned there. In fact, let's start off with Cameron Green. Nikhil bhai, starting with you now. Cameron Green, we're still not sure कि वो बैट कहाँ पे करेंगे. What we are sure is अगर वो खेलेंगे तो सिर्फ एक बैटर के तौर पे खेलेंगे. Number 3 is widely being considered as the slot that will be offered to Cameron Green because अभी Steven Smith number 4 पे आ जाएंगे. Do you think that is the most likely option considering कि लाबुशेन से वो open करा सकते हैं अगर चाहिए तो, assuming Sam Consis would be a very wild choice at this point in time? ये मेरे को भी लगता है कि कैम ग्रीन नंबर 3 पे ही खेलेगा. I think they would rather, और मानस को they've bagged enough for him to get dropped at this point of time. So I feel Sam Constas might be the one who is the one left out, and they back Marnus and Usman up top with Green at 3, which I think is perfectly fine for Australia as well, क्योंकि स्मिथ उसके बाद का भी जो आपका इंजन रूम है वो सही है, सेटल्ड इंजन रूम है. ट्रेविस हेड, कैरे, वेबस्टर भी खेलेगा, तो दे आर नॉट पीपल हु कैन नॉट रिलाई ऑन. स्मिथ तो है. सो विद कैम ग्रीन, गिवन दैट ही इज अनलाइकली टू बोल, ही विल प्ले अ मैसिव पार्ट if he is just playing as a pure batter, क्योंकि we know how good he has been even in the county cricket recently. Manas bhi county cricket khele, but she's had a single digit score and an early 20, but Cam Green has scored centuries. So wo aa bhi raha hai into this game on the back of good domestic form. So very very crucial for Australia to tick that box, kyunki this is the place where South Africa can catch Australia off guard. Top 3 India ने भी पकड़ के रखा था उनका till the time India lost steam with their bowling. But if South Africa can catch Australia's top 3 very very early, it will mean that this will become Smith versus South Africa. So at this point of time, अगर आप South Africa हो, तो you are looking at every possible chink that you can exploit. So that I think puts the basket completely in South Africa's favor. If you take few early wickets, this game is for you to win. All right, this game would potentially or could potentially be South Africa's game to win. But talking about the playing 11s, it's been a good, 5.5 months since either side has last played a test match. So there would be a bit of rustiness. Of course, Steve Smith himself spoke about how he lifted a bat for the first time after 3 months, the longest hiatus that he's had from even, touching his bat, something he consciously did to just let go of certain things. So, me starting with you, let's talk about the Australian 11. कुछ चीजें बहुत obvious है. I mean, like Nikhil said, they're not going to drop Marnus Labuschagne after him being part of the side for better part of the last half a decade.
So I expect him to open. I'm a little surprised that Green is batting at 3 because I would have expected कि Smith would move up at 3 क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो भी आ रहे थे जब मार्नस 3 पे रन बना रहा था कि Smith is feeling कि भाई बहुत वेट करना पड़ रहा है for him to go out to bat and he's developing that restlessness. So probably he would have moved one step up, but I think it's already been reported कि Green will bat at 3. So pretty straightforward यार उनका फिर स्मिथ तो 4 पे है ही, नीचे बो वेबस्टर है, 5 पे हेड, कैरी एंड bowlers. I'm pretty sure Hazelwood is going to play and not Boland because Hazelwood is there, has been their P1 so to speak, and second thing is, I mean, Boland last Ashes was not that impressive, and Boland unlike a lot of other Australian players, Boland ने बहुत ज़्यादा county cricket भी नहीं खेला, so it's not like he's coming off of a very a lot of experience in England. So I think that call also is pretty straightforward as far as I'm concerned. And just to be clear, they probably won't go with a 5-pronged pace attack. Nathan Lyon would continue to. No chance. Australia will never do it. And Nathan Lyon, we're talking about Nathan Lyon. We're not talking about maybe कौन हो सकता था जिसको वो ड्रॉप करने का सोचते भी, but I don't think it's happening with Nathan Lyon. All right, fair enough. Nikhil bhai, what about you when it comes to the South African 11? How are you looking at this right now? So I think this is the only 11 that has plenty of options that can be tried up and down the order. यहाँ पर भी top 3 में problem है, with Markram being the rock solid there. Do they go to somebody like a Rickelton to open, or do they want Tony D'Souza back? That is a call that they'll have to take. I personally feel they might stick with Markram and Rickelton क्योंकि it will just give them solidity from one end and impetus from the other. मल्टर को 3 पे काफी ट्राई किया है साउथ अफ्रीका ने पिछले काफी कुछ समय में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ मल्टर वॉक्स इन एट 3 बिकॉज देन इट मींस के जो उनका जो बाकी का फिर इंजन रूम है, जैसे आई डिस्कस्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया, इट देन लुक्स वेरी सॉलिड. स्टब्स एट 4, बवुमा 5, बेडिंगम 6. आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ठीक है बेडिंगम थोड़ा नीचे खेला, बट आई फील दे विल वांट दैट एश्योरेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो बेडिंगम 6, यू हैव काइल वराइन भी है, so he'll bat, and then you have Jansen, Patterson, Maharaj and Rabada. So because Patterson has also played a lot of cricket in England, it makes no sense to drop him for anybody else. I think Corbin Bosch, it will be a very Gautam Gambhir selected 11. Sorry, Gautam bhai, to drag you here. Okay, आप 2-3 all-rounders खिलाओ as instead of a specialist against Australia, but I think this is the way they need to go. Just to add on to Nikhil's point on the 11, I feel Rickelton should play. कहाँ खेलता है वो देखना पड़ेगा. Even if they play him as the primary keeper in the lower middle order, I'll be okay with it. Just the reason being that he seems to be a more ready batter, a more experienced batter, a batter who has been around. Because अगर मैं again first class numbers in England is all I have to go with. उसकी मैं बात करूं तो he's actually averaging 51.9 in England, which is second best after Bedingham in this South Africa squad. और टोनी डिजोर्जी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला है इंग्लैंड में, एटलीस्ट एज फार एज माय नंबर्स आर कंसर्न, आई डोंट सी हिम. एंड अगर मैं काइल वरेन से भी कंपेयर करूं तो वरेन इज एवरेजिंग 20 समथिंग in the 26 range. So for me, Rickelton plays for sure. Does he open or he plays as a wicket keeper? That's their call to make. Apart from that, I mean, I'm pretty excited to see Stubbs in tests because he has been one of my favorite players going around. So let's see. Hopefully, he plays a very good cameo, which turn things around. But एक चीज है, South Africa have batting depth. They have Jansen batting at 8, which is proper ऐसा impact player type की batting depth है ये. So that is something that is not going to worry them. I feel from a South Africa lens, supporting them, कि अगर if the ball is doing something, it gives them an edge. अगर ये विकेट एकदम फ्लैट हो गया, हाई स्कोरिंग रहा, तो आई थिंक देन ऑस्ट्रेलियाज एक्सपीरियंस इन द बैटिंग डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली वर्क इन देयर फेवर. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा मतलब कंडीशंस में कुछ बॉलर्स के लिए हो ज्यादा, तो देन डेफिनेटली साउथ अफ्रीका विल बी इन द गेम. I know that both of you, and of course myself included, we will be backing the Proteas there come the 11th of June.
But who do you think will actually end up winning the WTC final? Will we see the first instance of a second-time winner, or will we see the third instance of a first-time winner? And importantly, will South Africa finally win an ICC trophy in this millennium and end that drought? Nikhil bhai, starting with you. Kaun hai bhai is back ke winners? I'll use what I can in terms of powers. Australia will win. 9-10 wicket win for Australia. यार तुम लोगों ने वो समर ऑफ जॉर्ज वाला एपिसोड देखा है क्या साइनफेल्ड का, जहां पर वो डिसाइड करता है कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसका मैं ऑपोजिट बोलूंगा. तो आई थिंक लर्निंग माय लेसन्स फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, ये सीजन मतलब मैंने सोच के रखा है. फाइनल में भी मैं आई वाज इन पंजाब वोट. फॉर मी दे फेल्ट कि भाई मोमेंटम है ये वो, बट नहीं, आरसीबी स्टिक रहना है इस बार. तो ऑल्दो आई फील ऑस्ट्रेलिया आर मैसिव फेवरेट्स, I think South Africa should win this. कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि निकले इस बार. I mean, one cannot deny some sort of resemblance that George Costanza bears with Temba Bavuma. Let's hope even that just somehow comes to fruition, and let's hope, of course, for cricket's sake and for South Africa's own sake, that they finally, of course, win the trophy. But that's that from this bet. We spoke about the lack of experience, but potentially skill ke mamle mein there's not much separating the two sides. On the one side, we've got the youth and exuberance of the young South Africans. On the other side, we've got the mighty Aussies who know a thing or two about winning trophies, of course, be it at home or away. Until then, it's a goodbye from all of us. Do let us know in the comments, what did you make of it? Who do you think will be winning the WTC final? And importantly, who would you guys be backing? Until then, take care. Bye-bye.